Welcome to you all, three, season 3 of Mashavara Live Consultation. As we navigate the challenges, हम अगर challenges के बारे में बात करें और opportunities के बारे में बात करें for the inclusive world, this live consultation on the inclusion and diversity remind us that it is very much essential components for thriving the equitable society, जहां पर हम समानता के बारे में बात करते हैं, अधिकार के बारे में बात करते हैं। तो ये मशवरा का जो हर सेशन, पिछले जितने भी सेशंस थे और आने वाला भी सेशन, वो इंक्लूजन और डाइवर्सिटी को बड़े अच्छे से आप सब तक पहुंचाएगा। So I am your host and moderator, Dr. Alok, and it is pleasure to have you all here with us today. And our topic is very much important for this episode, and this topic is talking about a step-by-step guide. हम लोग सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे एक गाइडेंस करें टुवर्ड्स द लीगल एंड लिमिटेड गार्जियनशिप। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे का लिमिटेड लीगल गार्जियनशिप बने। हम गार्जियनशिप के लिए कैसे करें, हम कैसे सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करें, तो उसके लिए हम लोग बातचीत करेंगे आज। एंड आई ट्रस्ट दिस एपिसोड ऑफ मशवरा सेशन 3.79 will be unlocking a very great independence for the people with disability. Through this, we will talk today about the supported decision making, and we will concentrate on it. So this episode will be very much important with you all. And then we know that today we have the many audience, and we have the audience our represents from the diverse group, individuals from various backgrounds. So some of them are the professionals, parents, persons with disability, and whole community. The students are also here. So in the studio, participating remotely, we welcome you all, my very great audience today. And season 3 of Maswara has very good theme. You just believe on it, that inclusion and diversity. So as it is very much essential component of thriving the equitable society, और हम लोग हर कोई बात करता, आज जहां भी देखें इंक्लूजन के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में, क्योंकि हम एक ऐसे सोसाइटी का, एक ऐसी कम्युनिटी का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर सबको समानता का अधिकार मिले। तो वैसे वर्ल्ड के लिए ये मशवरा का जो सीजन 3 है वो बहुत अच्छा होने वाला है, और हम लोग बहुत ही अच्छे से कन्वर्सेशन करेंगे। And let me tell you that how the Mashwara was started, and it was started in April 30th April in 2020. So during the COVID-19 pandemic, and our first episode, Mashwara 1.0, was a step to prevent harm to the people with intellectual disability and their families in the COVID emergency. So we were talking about those days about the COVID and all, and we know that our first episode was started with the very great eminent expert Dr. Nimeshji Desai sir and Dr. Roma Kumar, and we had the more than 60 episodes in season 1, and you will be surprised that around 2 lakhs viewer we had joined in the season 1, and during Maswara season 2 we had around 30 episodes, and our viewer about the 5 lakhs viewer we had around the globe. It is not only in the India and everywhere. तो हम लोग बड़े अच्छे से मशवरा सीजन 1 और सीजन 2 में बहुत सारे लोगों तक पहुंचने की कोशिश किया है, और पहुंचा भी है, और अभी तक आप सभी का प्यार मिला है। आप सभी, हम सभी से, हमारी टीम से आप सभी का प्रॉपर कम्युनिकेशन है, प्रॉपर आप लोग बातचीत किए हैं, हर बात पे, हर मुद्दे पे हमने आपके साथ कोई ना कोई चीज शेयर किया। And today we are very much happy to share you that we have the very great expert, and he has the great extensive knowledge in this sector. So the extensive knowledge means he has the distinguished expert, and Dr. Advocate Umesh Kumar Sukla ji, UK Sukla Sahab. He is an advocate and consultant in the disability sector, and many of you have met him. He is the former assistant legal advisor in the National Trust, Government of India. So thank you
sir, for giving your valuable time today, and we welcome you also. And let's talk on the topic. सो आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो इस सब्जेक्ट के, इस विधि के, इस पूरे थीम के महारत हासिल तो किए। बहुत ही अच्छा इनके पास एक्सपर्टीज है। और आज हम लोग जब इस मशवरा लाइव कंसल्टेशन में हैं तो हम लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे, हाउ वी कैन मेक इट इजी, इजी स्टेप्स टुवर्ड्स गाइडेंस, टुवर्ड्स गेटिंग द legal guardianship law, and we should understand what kind of legal guardianships are available and whether we need to provide the legal guardianship or not, the people required or not, that we will also understand and accept it very prominently. And we also welcome here Nitisha. She is the sign language interpreter, and if anyone who requires the sign language support, you please write her in her personal window. She will help you out. And very good that we will discuss many topics, and we have 90-minute session, and we will talk about the securing the guardianship legally and easily. How through the legal process we can get the guardianship, and how it will be the easiest method to avail it. And we will also understand the legal capacity. So while we talk about the people with disability, legal capacity जानना बहुत जरूरी है। में भी कैपेसिटीज के बारे में बहुत सारी बातें हैं, और लीगल गार्डियनशिप और लिमिटेड गार्डियनशिप भी है। सिर्फ एक ही हम नेशनल ट्रस्ट के गार्डियनशिप पे बात ना करें, हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर हम लिमिटेड कुछ समय के लिए भी गार्डियनशिप के बारे में बात कर सकते हैं। हम कुछ फैमिली सपोर्ट प्लान के बारे में भी बात कर सकते हैं कि हम फैमिली सपोर्ट प्लान कैसे बनाएं, हम गार्जियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और डेफिनेटली वी विल हैव द लॉट ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन, एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दिस सेशन कि अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो यू विल गेट द चांस टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द आवर एक्सपर्ट, फ्रॉम आवर पैनलिस्ट. सो वी वेलकम यू अगेन सर, and I'll give you the little brief on that topic, and let me share you because I have prepared something for you all, and then that will be very helpful. I hope so. So let me share you one presentation so that it will be helping you out. And definitely you all will get this presentation, and I ensure after this, maybe in a week and so, we will have this presentation very easy read, so that the people with disability, especially those with the intellectual disability, वो भी बड़े आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, बड़े आसानी से इसको बातचीत कर सकते हैं। और डेफिनेटली हम कुछ समय के बाद हम आपके पास ये लाएंगे। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कि गार्जियनशिप होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए या नहीं, हम इस पूरे मैटर को, आज पूरे इस थीम को वी विल टॉक ऑन द बेस्ड ऑन द ह्यूमन राइट्स। और ह्यूमन राइट्स जो है, मानव अधिकार जो है, इट गिव्स यू द फ्रीडम टू मेक द चॉइस कि हम गार्जियन रखें या ना रखें, हमें क्या पसंद है और हमें क्या नहीं पसंद है। ये हमारा मानव अधिकार है, हम सभी को जानना चाहिए। और हम लोग ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को, जो फंडामेंटल सिद्धांत है, उसको अगर पकड़ के रखें ह्यूमन राइट्स के, तभी हम इस पूरे गार्जियनशिप के एपिसोड को समझ सकते हैं। एंड एवरीवन शुड बी एबल टू डिसाइड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली टू देयर वैल्यूज, डिजायर एंड इंटरेस्ट। इवन द पीपल विद डिसेबिलिटी, दे विल बी इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट कि हमें गार्जियनशिप चाहिए या नहीं चाहिए। हम उससे भी पूछने की कोशिश करेंगे, उनके वैल्यूज को भी समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे लीगल और एथिकल फ्रेमवर्क्स है हमारे भारत में, अभी तो भारत हम लोग कहना शुरू कर रहे हैं, टू हेल्प यू द एक्सरसाइज द पावर ऑफ चॉइस, कि हमारा जो चॉइस है उसको कैसे हम एक्सरसाइज करें, कि हम चॉइस बना नहीं पा रहे हैं। हम 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक और सेमिनार कर रहे थे ऑन द जेंडर इक्विटी। सो वी ऑल्सो टॉक लॉट ऑफ अबाउट द how to think about the freedom, how to think about
हाउ टू सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी। हमारा जो समाज है वो अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग व्यक्तियों के साथ बना है। तो हाउ टू बिल्ड द इंक्लूसिव सोसाइटी, इस चीज के बारे में हम लोग ह्यूमन राइट्स को अगर समझ ले तो वहां से हम लोग बड़े अच्छे से बात कर सकते हैं। और आज जो मैं बात करने वाला हूं, और आपको इस बात के साथ मैं गारंटी देता हूं, आई एम गिविंग यू, बिकॉज वी हैड द वेरी गुड द टॉक विद द एक्सपर्ट दैट ही इंश्योर्ड कि आफ्टर दिस प्रोग्राम it is not only the talk, it will be in a helpful model, that if you required any kind of help, if you required any kind of legal support or any kind of technical support towards this topic, so later on kabhi bhi aap, main rasta bata dunga how you can contact to our expert, you can contact him and you can ask him, or you can take his the consultancy, because he is the professional, so you can take his consultancy. So we can, we will definitely, it will be easy for securing the legal guardianship the way you want. And we will definitely today we will understand the legal capacity क्या है हमारी। हम और बात करेंगे कि लीगल गार्जियनशिप और लिमिटेड गार्जियनशिप के बारे में। और अगर हमारा फैमिली सपोर्ट में कुछ चाहिए, हमारा फैमिली ही अगर अच्छा गार्जियन बन सकता है, एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, so that how we can start the family support plan, family support initiative, उसके लिए भी बात करेंगे। और हमारे गार्जियंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बात करेंगे। मैंने कहा ह्यूमन राइट्स, हमारे 6 फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो है वो 6 बेसिक उसके प्रिंसिपल है, बेसिक सिद्धांत है। सबसे पहला हम कहते हैं कि फ्रीडम टू, राइट टू फ्रीडम। तो वो क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम है, इसका एक लाइन में यही फंडा है कि बिलीव इन वॉट एवर यू चूज। तो आप पसंद करते हो वो आपका क्या है, फ्रीडम है, आपकी स्वतंत्रता है कि आप क्या क्या चीज पसंद कर सकते। तो ये आपका अधिकार है। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, इट इज ऑल्सो देयर इज ए, if you feel somewhere it is abuse, somewhere it is exploitation, then there is a right, you can ask some, you can seek some legal support from this, the fundamental human rights। and then freedom to religion, हम सभी अपने वैल्यूज के साथ, हम अपने रिस्ट्रिक्शंस के साथ या इंटरफेरेंस के साथ हम अपना जी सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस को कम कर सकते हैं, विदाउट रिस्ट्रिक्शन जी सकते हैं। हमें जो पसंद है, जैसा धर्म पसंद है, जो चीज पसंद है, हम उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। कल्चरल और एजुकेशनल राइट है कि हमारा हर तरह का सिद्धांत हमें मिल सकता है कि हम लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट जो पसंद है वो हम चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे किसी को साइन लैंग्वेज पसंद है, वो साइन लैंग्वेज भी चूज कर सकता है, वो उसका लैंग्वेज है। तो एंड देन 6 1 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू। और कोई भी लीगल कैपेसिटी यही पर करती है कि हर व्यक्ति को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का अधिकार है। एवरीवन हैज द लीगल राइट्स। सो all these fundamental rights are also valid for people with disability, persons with disability. It is not only to the, it is for everyone, including the people with disability, even including the people with intellectual and developmental disability, even those who are in the high support need, everyone has these 6 fundamental rights। तो हम लोग आज पूरे कहानी को, पूरे को हम लोग इसी 6 फंडामेंटल राइट्स के इर्द गिर्द रख के सोचे कि हमारे लिए लीगल गार्जियनशिप कितना मायने रखता है, क्यों चाहिए लीगल गार्जियन, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। सो दिस इज वेरी मच important because the very first one is the person with disabilities are often ignored and given the freedom to make their choice, own choice। हम स्पेशली क्या होता है इन द टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, इसके पास समय नहीं होता, चलो भाई आज तुमको मैं जो मेरे पास सामने कपड़ा दिख रहा वही पहना देता हूँ। हम उससे पूछते भी नहीं है कि आज कौन सा कपड़ा पहनोगे, क्या खाना खाना है, भूल जाते हैं कभी कभी पूछना कि उनको भी क्या कुछ पसंद होगा। हम बहुत सारी ऐसी बातें, क्या पढ़ना है, क्या किस तरह का जॉब करना है, किस तरह के एजुकेशन में जाना है, ये भी हम भूल जाते हैं उनसे बातचीत करना। तो हम ये बात अगर अपने जहन में रखें कि persons with disability should not be ignored to the make their own choice and freedom। And then there is a very good important thing which I would like to tell you, the persons with intellectual and developmental disability, जो मानसिक रूप से अल्प विकसित लोग हैं, या फिर किसी को मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटी है, कोई मेंटली इल है या कोई भी है, वो भी अपना चॉइस बना सकता है। दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन, इट इज देयर विद द एप्रोप्रिएट सपोर्ट।
अगर हम सपोर्ट दे दें तो वो अपना पूरा जिंदगी बड़े आराम से जी सकता है। देन अ पर्सन विद डिसेबिलिटी मे नीड डिसीजन मेकिंग हेल्प एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। हम अभी तक, मैं कितने साल से एलएलसी मेंबर रहा हूं, कितने साल से स्नैक मेंबर रहा हूं, और मैं वेरी फर्स्ट डे से, जब से नेशनल ट्रस्ट एक्ट स्टार्ट हुआ है, शुरू हुई थी, जब इसके कंसेप्ट अवधारणा शुरू हुई थी, उस दिन से मैं इस ट्रस्ट के साथ, एक्ट के साथ, और मैंने अभी तक यही पाया है कि क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ नाम का एक पेपर के लिए लीगल गार्जियन बना देते हैं। हम कभी पर्सन से भी नहीं पूछते कि क्या ये तुम्हारा लीगल गार्जियन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नंबर वन। दूसरा चीज, हम कभी ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं करते उस गार्जियन के साथ, कि उस व्यक्ति का ट्रस्ट हो, वो विश्वास करे कि ये हमारा लीगल गार्जियन अच्छा हो सकता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? कि ओके, इफ आई डोंट आस्क द पीपल विद डिसेबिलिटी, चल जाएगा, उसके बिहाफ पे हम तो डिसीजन ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी नीड टू आस्क द पर्सन विद डिसेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंटली, बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। तो हम कभी भी, ये हमारा लीगल बाइंडिंग है कि हम कैसे उससे पूछें। क्या हम छोटे समय के लिए गार्जियन बना सकते हैं, स्पेसिफिक पीरियड के लिए, या लंबे पीरियड के लिए, या कुछ दिन के लिए, या कोई एक दो मैटर के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो कभी कभी वी नीड टू हैव द डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, एंड दैट डिसीजन मेकिंग सपोर्ट वी रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ लीगल हेल्प, लाइक द हमारे जो आज पैनलिस्ट है, उनका लीगल उसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं कर सकते हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरी फैमिली मेंबर, एवरी individual with any disability, or including the intellectual and developmental disability or high support need, don't feel they are incapable. They are the capable. They can take the decision. They can guide you better. So that is what we need to understand, the whole ongoing support, कि हम जितना भी सपोर्ट बात करेंगे, लॉन्ग टर्म में भी बात कर सकते हैं, परमानेंट गार्जियनशिप के बारे में बात कर सकते हैं, अगर हमारा जैसा रिक्वायरमेंट है, मे बी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, जो सपोर्ट सिस्टम है। So that kind of exercise we can think, even we can think about the including the educational support, including the employment support, including the family support, उसमें guardianship का क्या role हो सकता है, that we can also understand the system. So we need to promote the awareness like this. We should not promote only कि हमें एक लीगल गार्जियनशिप चाहिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट में या पीडब्ल्यूडी एक्ट में, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, सिर्फ हम वो चीज नहीं करें, हमें एक पूरा लीगल कैपेसिटी के हिसाब से हम बातचीत करें और उस तरह का सपोर्ट सिस्टम बनाएं। हम अगर लीगल कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो क्या चीज है? लीगल कैपेसिटी है राइट टू ट्रीट इक्वली विथ अदर्स, वेरी क्लियर, हमें समानता के तरह ट्रीट किया जाए, समानता का अधिकार मिले। तो दैट इज व्हाट वेरी मच इंपॉर्टेंट। लीगल कैपेसिटी इज व्हाट द पर्सन कैन ओन द प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल और वॉट एवर इट इज। ऐसा नहीं कि वो तो डिसेबल्ड है, उसको कोई प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, उसको तो चलो इग्नोर कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो खुद उसका मालिक हो सकता है। सो दिस इज द लीगल कैपेसिटी। एंड देन दे कैन कंट्रोल द फाइनेंशियल अफेयर्स, उसका बैंक अकाउंट वो खुद कर सकता है, वो लोन ले सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिट ले सकता है, वो उसकी लीगल कैपेसिटी है, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो इसलिए हमें इस इन सब चीजों के डिसीजन मेकिंग में गार्जियनशिप या डिसीजन सपोर्टेड डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता है, जब हम लीगल कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। तो जब भी हम कोई भी, एंड देन द वेरी गुड लीगल कैपेसिटी इज right to equal recognition wherever they are, anywhere before the law, everyone is equal. So even the persons with disability or any kind of persons, they need to keep their views in front of law. So that is what we need to understand. कभी भी अगर कहीं मान लो कि in country like India now वी आर इन ए सिस्टम कि ठीक है, वो बच्चा जिंदगी भर हमारे पास रहेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ आई एम फाइंडिंग दैट देयर आर सो मेनी सेल्फ एडवोकेट्स आर कमिंग अप। बहुत सारे एडल्ट्स लोग जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले हैं, वो अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं। वो कह रहे हैं नहीं, हमें अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, हमें तो अपना फ्लैट में रहना है, हमें अपना खुद का सारा सिस्टम बनाना है, हमें खुद नौकरी करना है, हमें खुद आगे बढ़ना है। सो ऑल द फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, all the support system, they can take the decision, but maybe sometime they require kind of support,
कि कोई उसको डिसीजन लेने में मदद कर दे। तो हम इस तरह के चीजों के बारे में डेफिनेटली आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन टू डिसेमिनेट the all the information, create the awareness कि persons को legal capacity है, understand the matter, even while we are talking, while we are writing something for the persons with disability, we should have in a accessible format। और जब हम अपने घर में भी बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, हम बड़े बड़े टर्म्स यूज ना करें, बहुत ही सिंपल टर्म्स में, इजी राइट में, इजी रीड में, इस तरह के बारे में बात करें, सो दैट कि वो और आराम से उस चीज को समझ पाए। और लीगल कैपेसिटी अगर नहीं हो, इग्नोर्ड हो जाए, तो क्या होगा? इफ यू इग्नोर समवंस लीगल कैपेसिटी, इट विल कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विल अराइज। अभी मोस्टली मैं देखता हूं कि इन केस ऑफ एनी इरेगुलरिटी ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक ट्रांजिशन, मैं बीच में एलएलसी मेंबर में अभी पिछले आई हैड द वेरी गुड एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग द लीगल गार्डियनशिप सपोर्ट। सो वन पर्सन दे केम जस्ट कि हमें उस व्यक्ति के नाम का जो संपत्ति है, मैं इसका गार्जियन बन के हड़प लूं। भाई, ये तो उसके लीगल कैपेसिटी को आप खत्म कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। सो इरेगुलरिटी है। तो इसीलिए हमें इन सब चीजों के बारे में बात करना है कि कोई भी डिसअप्रोप्रिएट उस व्यक्ति के साथ इनइक्वालिटी ना हो, चाहे उसकी ऑटोनॉमी है, चाहे उसकी डिग्निटी है, चाहे उसकी प्राइवेसी है, हर चीज पे हम बात करें। और हम उनको, चाहे कोई भी हो, चाहे उनके साथ, मोस्टली मैं देखता हूं कि जो फैमिली में है ये क्वेश्चन अराइज होता है, और बहुत सारे ऐसे भी डिसीजंस होते हैं कि वहां पर हमें सोचना पड़ता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को हम शादी के बारे में बात करें या ना करें, उनके रिलेशन, उनके प्रॉपर्टी के बारे में उनसे बात करें कि ना करें। तो इन सब चीजों के लिए हमें लीगल कैपेसिटी को समझना जरूरी है, ये उनका अधिकार है। और आप पे, आपके ऊपर निर्भर करता है कि लीगल गार्जियनशिप और लिमिटेड गार्जियनशिप, कैसे आप किस तरह का गार्जियनशिप दें। हमारे पास आज वकील साहब बैठे हुए हैं, सो ही इज अ वेरी सीनियर एडवोकेट from the high court, from he is now he will start the practicing from supreme court। so अब आप ये बताइए कि जो पिछले 15 साल, 10-12 साल से इसी तरह के चीजों को, लीगल गार्जियनशिप के चीजों को नेशनल ट्रस्ट में हैंडल करते हुए आ रहे हैं, तो उनके पास आपके लिए पूरा लीगल सपोर्ट, पूरा कानूनी दायरा, सब चीज पता है। तो मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ, सर भी आपको बताएंगे, और बाद बाकी खुला हुआ है, दरबार खुला हुआ है। आप कभी भी you can take his consultancy and he will guide you very better। so if we talk about the guardianship, so there is a very first act is guardians and ward act 1890। तो इसमें क्या होता है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, वो कोई भी माइनर के लिए, 18 साल से नीचे अगर कोई बच्चा है, उसके लिए गार्जियन किसी को चाहिए, तो वो उसको अपॉइंट कर सकता है। अदरवाइज क्या होता है, आम अगर अगर 18 साल नहीं है, तो आपका गार्जियन कौन है? आपके माता पिता। लेकिन अगर किसी केस में, कंडीशन में गार्जियनशिप चाहिए, तो वो आपको उस एक्ट में मिल जाएगा, गार्जियनशिप एक्ट में। और लेकिन एक और अच्छा प्रोविजन है अंडर द मेंटल हेल्थ एक्ट। so if some person is a minor and he having the mental disability, like उसको mental illness है या कोई भी psychological trauma है, और उसका इलाज करना है, और उसकी इलाज की जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा, तो हम उस पर्सन को भी ले, उस बच्चे को भी ले जा सकते हैं इस एक्ट में, उस कोर्ट के पास, कि भाई इसको कोई एक गार्जियन दो, तो दैट कि इसका इलाज का डिसीजन कोई ले पाए। तो दो प्रोविजन आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि मेंटल हेल्थ एक्ट का भी हम अगर कोई मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है किसी को, और उसको गार्जियन नहीं मिल रहा है, वो माइनर है, तो हम पर्सन्स विद, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, जो भी नेशनल ट्रस्ट की डिसेबिलिटी है, अगर वो 18 साल से नीचे है और उसको अगर गार्जियनशिप की जरूरत है, दे मस्ट गो इनटू दिस गार्जियन एंड वार्ड एक्ट, दे शुड नॉट कम टू डायरेक्टली टू द नेशनल ट्रस्ट एक्ट। बेसिकली यहाँ पर भी उनको इस एक्ट में गार्जियनशिप मिल सकता है। तो लीगल प्रोविजंस और लिमिटेड गार्जियनशिप प्रोविजंस यहाँ भी दिया जा सकता है। यहाँ पर भी हर बच्चे को तब तक का गार्जियन दिया जाता है जब तक कि वो एडल्ट ना हो जाए। तो आप 18 साल से अगर कोई भी नीचे है, तो वो आप उस गार्जियनशिप एक्ट में जा सकते हो। दूसरा जो प्रोविजन है, लीगल गार्जियनशिप अंडर द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, इसमें एलएलसी बनाया गया। हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल लेवल कमेटी है, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड करता है, वहां पर
किसके लिए हो सकता है? यहाँ पर लिमिटेड लोगों के लिए होता है, सभी डिसेबिलिटी वाले के लिए नहीं होता. So under this act, only the persons with autism, cerebral palsy, mental retardation, or intellectual disability and multiple disabilities, they are the person, they can come to this act to get the guardianship. So सबसे पहले अभी हम लोग, I have seen it very widely in whole nation, हम गार्जियनशिप दे देते हैं, उसके बाद एक्ट का लाइन नहीं पढ़ते. So now I would like to highlight to all, everyone here, those who are understanding and listening to this, and those who are preparing for the guardianship. So what are the duties of legal guardian? You must know it. And मैंने अपने इस दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में ये पूरी तरह से अप्लीकेबल करा दिया है. मैंने सभी जितने भी गार्जियंस अभी तक अपॉइंट किए हैं, सबको मैंने लीगल नोटिस भिजवाया एलएलसी के थ्रू कि भाई आप जो है अपनी ये ड्यूटी पूरा करो. तो आपका सबसे पहला लीगल गार्जियन का ड्यूटी है, विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट सबमिट इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वेंट्री टू द एलएलसी. जो भी प्रॉपर्टी है उस बच्चे के नाम से, या जो भी प्रॉपर्टी आप ओन कर रहे हैं, उसका एक लिस्ट बनाकर आप एलएलसी को दीजिए. सबसे पहला काम. नो वन इज कमिंग विद दिस लिस्ट. जस्ट उसको एक कागज चाहिए, कागज नहीं चाहिए, यहाँ पर बहुत सारा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी है. तो सबमिट अ लिस्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज एंड डेप्थ ऑफ द पर्संस विद डिसेबिलिटी. कोई भी, अगर कोई मान लो कि कोई कर्ज लिया हुआ है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टीज मॉर्गेज किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ, वो भी आप एक बड़े अच्छे से एलएलसी को इन्फॉर्म कीजिए. एलएलसी आपकी प्रॉपर्टी नहीं लेगी, आपको हेल्प करेगा, उस बच्चे को जब जरूरत होगा तो हेल्प करेगा. एंड देयर इज अ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज that the furnish an account of property and assets in his high charge within 3 months at the close of every financial year. जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, उस गार्जियन को एक ऑडिट रिपोर्ट, उस बच्चे के नाम का क्या प्रॉपर्टी है, क्या चीज है, उसको लोकल लेवल कमिटी में सबमिट करना है. जो ये मेन ड्यूटी है गार्जियन का, और कोई गार्जियन नहीं आता है इसको सपोर्ट करने के लिए, ये चीज करने के लिए. तो हमें गार्जियन नहीं बनना है. अब क्योंकि मैंने लीगल कैपेसिटी के बारे में बात किया, तो आप ये सोचिए कि कोई भी, एनीवन कैन आस्क यू अबाउट दिस लीगल कैपेसिटी, कि आप जब भी इस काम को कर रहे हैं तो एनीवन कैन आस्क यू कि भाई आप जो है ये सब चीज क्यों नहीं दिए. तो आप गार्जियन बनने से पहले इन सब चीजों के बारे में सोचिए. एलएलसी क्या करता है? एलएलसी जो है अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल गार्जियन कर देगा. जो भी वो देखेगा कि जो भी उस बच्चे का चॉइस क्या है, उसके बिहाफ में वो डिसीजन ले सकता है. एंड देन whoever the appropriate person they can appoint and they can remove the guardian also. अगर मान लीजिए कोई पेरेंट, कोई रिलेटिव, कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो अगर कंप्लेन कर दे या सजेस्ट करे कि ये गार्जियन जो है ही इज निग्लेक्टिंग और मिस अप्रोप्रिएटिंग और मे बी मिस यूजिंग हिज प्रॉपर्टी, देन वो एलएलसी क्या कर सकता है? उसका रिमूवल ऑफ द गार्जियन कर सकता है. एनीवन शुड just giving the complaint is very important, and can also follow the prescribed procedure to apply the committee कि क्या इसका फिर गार्जियन को कैसे रिमूव किया जाए. और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है. अब बहुत सारे केरला में, बहुत सारे ऐसे स्टेट में जो है कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बन रहा है, और दिल्ली में भी बहुत अच्छा, मैं इस दिल्ली में खास करके बना रहा हूँ कि जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी वो किस कंडीशन में है, वो उसका क्या प्रॉपर्टी है, क्या कोई उसको देख रेख कर रहा है कि नहीं, खाना मिल रहा है कि नहीं, उसका हेल्थ अप्रोप्रिएट है कि नहीं. तो होम विजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So we are monitoring that home visit should be done in a regular basis. So discuss the relevant issues with the family, relative, उसके आसपास के neighborhood से कि कोई dispute तो नहीं चल रहा है, कोई family neighborhood में कोई problem तो नहीं. So this is the whole funda of the national trust. Under the national trust, there is a legal guardianship provision. But what we come here to take a piece of paper, give me the certificate, I want to operate a bank account. This is not the only fair means. This is not the legal capacity. So we need to think about the legal capacity of the person, कि हम कहीं उसका misuse, कहीं उसका abuse तो नहीं कर रहे हैं. So under the RPD Act, इसमें भी guardianship का provision है. So what are the provisions? There is a limited guardians. Limited guardian means what? कि हम एक कोई conditional guardian बना सकते हैं. Make a legally binding decision. कि हम किस किस कंडीशन पे अगर उससे अप्रोप्रिएट बातचीत हो जाए व्यक्ति से कि ठीक है हमें प्रॉपर्टी बेचना है. जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. द पर्सन विद डिसेबिलिटी ही डिजायर्ड
to sell out the property, but he is not able to take the decision. Or maybe the person, he wants to have some medical operation or medical surgery. He is not able to take the decision. Then he can go to this provision and have a limited guardianship for a particular period. कि ठीक है, ये काम हो जाए, उसके बाद उस गार्जियन का रोल खत्म. So this is called limited guardianship. So trust and mutual understanding between the guardian and person with disability are very crucial to make this support system. तो हम वो system यहाँ पर create हो सकता है under this RPWD Act. And this is the joint system of the decision making. So in under this RPD Act, it is very clearly written that everything will be operated on the mutual understanding and trust between the guardian and person with disability. कुछ भी बिना उसके ट्रस्ट, बिना उसके अंडरस्टैंडिंग का हम कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं under this act. And then terms is the limited guardianship. It can be for the specific period. As I told you, you can apply for a specific decision situation. You can let the determine by the people with disability what he wants, or any persons with disability, any persons with benchmark disability, जिसके पास disability certificate है 40% and above का, वो is under this RPD Act, including the persons with autism, cerebral palsy, intellectual and developmental disability, mental health disability. Anyone can come under this act and seek the legal guardianship, limited guardianship support from under the RPD Act. And even for a longer period, if you want, the guardian should be for a longer period. So that can be also valid, and they can exercise their provisions. And I'll give you that another. There is one more act. This is called the Mental Health Act. So in the Mental Health Act, so there is an alternative guardianship. I told you the legal guardianship, limited guardianship, and third provision is for the alternative guardianship. So alternative guardianship is required only for the minor with mental illness under this act. If the current guardian is not acting, or the acting, maybe the parents is ignoring, or someone has the mental health issues or mental health disability, and he is ignored by whole society and everyone. So that for the best interest of the minor, you can go to this under this act and seek the legal guardianship, the alternative guardians for that minor child with the mental health issues. So mental health professional or person or anyone, even the society, from the society, anyone can say, even you all, if you feel someone has the mental health issues, many of you find that many people with mental health issues, they are on the road. And if you feel that they should have the guardian, they should have some mechanism to support system. So they can come to under this act, and they can go to the concerned or something like that. You can write some application to the board. There is a procedure, and that board will appoint the guardian, suitable person, or even any suitable person means someone voluntarily, if he comes for the guardian, taking the ownership of that person, that child having mental health issues, that they can be appointed as a guardian. Or maybe it's the director of social welfare, that the concerned board can appoint director of social welfare or their nominees as a alternative guardian of that minor child with mental health issues. So there is a provision of, even you can see that I especially even coming to this sector while I was in class 8, I came for this purpose only. I have seen a child who was deprived, who was very much ignored in front of my school. And from that childhood age, I was thinking how I can help him. So many of us here, we think कि हम इसको help करना चाहते हैं, कैसे करें? So if you find that he has any kind of mental health issues, you can take the leverage of this act, Mental Health Act, and then provide him the alternative guardianship. So even in minors, if they now it is not required, but if doctor suggests, or if some professional suggests, recommends that electroconvulsive therapy for that child with mental health issue, so
there also that permission of the guardian is required. If the guardian is not giving the permission, or if it is required, then you can also seek that support of the limited guardianship under this act. And then these are the the legal provisions. But there is a family support system. Even we don't take any guardianship under any act, there is no requirement of taking the guardianship under any act. It is very true. Even the bank cannot compel you to bring the legal guardian's certificate. No one can compel. If the person with disability, he is in a position to take his decision, he is in a position to make his right, he is in a position to exercise his human right. अगर वो अपना ह्यूमन राइट एक्सरसाइज कर सकता है, वो अपना चॉइस बना सकता है, वो अपना डिसीजन ले सकता है, तो उसको गार्जियन की जरूरत नहीं. So, but as or parent, many times we something for that child, or I want to take care of this child after my death, or after my illness, or whatever it is. So this is very important. We need to create the family support or community support system where we can talk very, very closely, very, very politely, very interactively to that all the people, those who are involved in taking decision. So there is the provision, and you can ask so many questions to the parents, those who are involved in this. So as a family member, you think who will care your child if you become critically ill or permanently disabled? Think about these situations. So who will take care of your child? Would your child with disability be able to fend for himself when you are no longer around him? अगर आप नहीं हैं आपके पास, तो कोई उसका अब्यूज तो करे या कोई उसको निग्लेक्ट करे, तो अपनी बात तो कह सके, वो अपने फेंड तो कर सके, अपनी बात को रख तो सके. आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? How do you ensure your special child get a proper medication, education, and economic rehabilitation? Think about it. And once you think as a family member, you will find, okay, he is able to take the decision of everything, so better. But maybe someone else in the family member, he can support in education. Maybe someone else in the neighborhood, he can support in in economic rehabilitation. There you can find out that kind of things. Also talk about that. What is the cost of taking care of your special child? This is very important. कि कितना खर्च लगता है इस बच्चे का, जिंदगी के लिए उतने पैसे हैं, या ये कमा पा रहा है, या ये इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो पा रहा है या नहीं. So that how the funds can be managed, how you will allocate the funds, these are the questions you can ask. How you can ensure, this is very important. Unsurplus or third party or someone should not abuse the child, or someone should not abuse his assets of the child, कि उसका कोई प्रॉपर्टी हड़प ना ले. तो अगर वो चीज वो व्यक्ति अपना खुद डिसीजन ले सकता है, खुद वो राइट एक्सरसाइज कर सकता है, वेल एंड गुड. And even someone can help him in this direction. Also, you can start thinking about the family support system. Also, ensure your child should be adequately supported, cared, maybe cared. Maybe within the family, I have seen there is a case. The siblings, he was tidying up in a chain to his younger brother. Younger brother has the इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और उसके पैर में चेन बांध के घर में रख दिया था. और उस बिकॉज द होल प्रॉपर्टी, एवरीथिंग वाज इन द नेम ऑफ दैट चाइल्ड, दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी. और उसका जो बड़ा भाई सोचता था कि हमारा तो सारा पैसा इसी के पास है, और वो लिखा हुआ था जब ये मर जाएगा तभी ये पूरा प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर हो जाएगा. बट इन द मीन टाइम दैट बिल वाज गिवन बाय द फादर एंड इट वाज वेरी क्लियरली रिटन. In the meantime, this whole property will be act as a means of income. जितने प्रॉपर्टी है वो मीन्स ऑफ इनकम ऑफ द फैमिली होगा. जो दुकान है, जो घर है, वो उससे क्या होगा कि पूरा फैमिली चलेगा. उसका बड़े भाई का भी फैमिली चलेगा, उसका भी फैमिली चलेगा. बट इट वाज गोइंग वेल. इन द मीन टाइम उस बड़े भाई का जो बेटा था वो थोड़ा बड़ा हो गया, बुद्धिमान हो गया,
कहा कि इतने करोड़ की प्रॉपर्टी, इट वाज अबाउट 200 करोड़ प्रॉपर्टी, और इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है तो हम इस चाचा को मार दें. So what was done? So done was, he was in a plan to leave him in any rail, any train, any moving train. He will be left out and then he will do something. So ऐसा ही हुआ. उस व्यक्ति को थोड़ा नशे का दवाई खिला के ट्रेन में लाया गया. और ट्रेन में लाने के बाद क्या हुआ कि वो सो तो गया, लेकिन उसके बगल में जो बैठा हुआ था, दैट वाज फ्रॉम हिज ओन विलेज. एंड ही अंडरस्टूड कि ओके, ही इज दैट फेलो. और फिर वो पुलिस को बुलाया, एंड देन पुलिस हैज रिस्क्यूड दैट थिंग्स. होल थिंग वाज सॉल्व्ड आउट एंड मनोविकास हैज गिवन द होल सपोर्ट. सो अगर हमें ऐसा लगता है कहीं पर अब्यूज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो फैमिली सपोर्ट, नेबरहुड सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर इन फैमिली सपोर्ट सिस्टम यू नीड टू मेक द विल. एक पर्सन जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट बना ले, उसमें सेट फॉर्थ कर ले कि व्हाट आर द विशेष, व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, how that child will be care, special or minor child, how they will look after. So it should be given, written in the will. That will also work very perfect.